Hello and welcome to my channel Project PMYP. In this video, we are covering current affairs from 15th April 2022 to 15th April 2023 from the book Drishti Current Affairs by Ghatna Chakra. And this video is going to be very important for all those who are going to appear in PCS 2023 going to be held on 14th of May और भी बाकी लोगों के लिए जो एग्जाम्स दे रहे हैं इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स विच कवर्स करंट अफेयर्स सो ऑलरेडी कई सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दिस इज आवर नेक्स्ट वीडियो तो लेट्स अस बिगिन फ्रॉम पीएम डिवाइन स्कीम प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन पीएम डिवाइन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट of Northeast region. In February 2022, a new scheme, Prime Minister's Development Initiative for Northeast region, was announced in Union Budget PM Divine and is aimed at rapid and holistic development of Northeast region by funding infrastructure and social development projects based on felt need of states. ठीक है, ये किसके लिए है? It is for development of Northeast region. PM Divine. Next is Matdata Junction. Recently, Election Commission of India has launched radio series Matdata Junction in collab with AIR for voters awareness and it was launched on 7th of October 2022 by Election Commission of India. मतदाता जंक्शन ये एक रेडियो सीरीज है. इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन स्टेट. Its objective is to provide 100 days of employment in year to family residing in urban areas. अभी तक चलता था मनरेगा फॉर रूरल एरियाज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलते थे. यहाँ पे अर्बन एरियाज वाला है ये. Those who get jobs under this scheme will be paid under three categories: 259 per day for unskilled laborers, 283 per day for skilled laborers and 271 rupees per day for supervisors. तीन तरीके से पेमेंट होने वाली है फॉर स्किल्ड अनस्किल्ड एंड सुपरवाइजर. इट इज लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम. ओके, नेक्स्ट कर्तव्य पथ. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द रोड कर्तव्य पथ बिटवीन राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट इन September 2022. The Government of India has announced to change the name of Rajpath and Central Vista Lawns into Kartavya Path to shed remnants of British colony in India. ठीक है, अब राजपथ इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ हो रहा है. During 15th August 2022 speech, Prime Minister asked the Indians to take 5 pledges और पंच प्राण. पंच प्राण क्या क्या है? To make India a developed country by 2047, remove traces of colonialism, take pride in legacy, strength of unity, fulfill duties as a citizen. ठीक है, ये आपके 5 pledge 5 fronts थे. Next, Operation Gearbox. In September 2022, the Directorate of Revenue and Intelligence (DRI) has launched Gearbox operation to stop heroin smuggling through the seaports. Operation Gearbox is conducted to detect the hidden drugs in gearboxes. Thus, it is named as Operation Gearbox. ये किसके लिए है? आपके heroin smuggling को रोकने के लिए है and by Directorate of Revenue Intelligence. Next, जलदूत ऐप. On September 27, 2022, Ministry of Rural Development has launched Jaldoot app and Jaldoot app e-brochure to capture groundwater level in a better way. It is for groundwater level. Ministry of Rural Development. अब ये important है, आपका Rural Development Ministry है ना कि जल शक्ति, तो आपको इसको ध्यान देना है. It is by Rural Development Ministry has developed Jaldoot to capture groundwater level in better way. ठीक है. Operation Megh Chakra. CBI has started Operation Megh Chakra on September 24, 2022 to combat the spread of child sexual abuse materials online. Operation Megh Chakra किसके लिए है ये? To combat spread of child sexual abuse materials online. Similar exercise code named Operation Carbon was conducted by CBI in November 2021. ठीक है, तो ऑपरेशन कार्बन एंड ऑपरेशन मेक चक्र बोथ आर रिलेटेड टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स ऑनलाइन. तो आपको ऑपरेशन मेक चक्र और कार्बन याद रहेगा. इट इज फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज
के मटेरियल्स को ऑनलाइन जितने अवेलेबल हैं उनको कम करना, उनको खत्म करना. इट इज लॉन्च बाय सीबीआई. ठीक है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द नेम ऑपरेशन कार्बन. ये कार्बन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है. जागृति, the Department of Consumer Affairs in July 2022 has launched Jagriti, a mascot for empowering consumers and generating awareness of their rights. जागृति आपका mascot है किसके लिए? Empowering consumers and generating awareness of their rights by Department of Consumer Affairs. Jagriti mascot shall be shown along with tagline जागो ग्राहक जागो. जागृति मैस्कॉट बना रहेगा. जागो ग्राहक जागो टैगलाइन है उसकी. राइट टू बी फॉरगेटन. Recognizing right to be forgotten as a part of right to be privacy, the Supreme Court in July 2022 ordered its registry to work out a mechanism to remove personal details of litigations entangled in matrimonial litigations. What is the right to be forgotten? It is stated that the data subject shall have right to obtain from all controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay. Right to privacy, the K.S. Puttaswamy versus Union of India. In 2017, 9-judge constitutional bench headed by Chief Justice of India J.S. Khekar, 44 CJI, ruled that right to privacy is intrinsic part of right to life and personal liberty under Article 21 of Fundamental Rights. ठीक है. परिमाण. With a view effectively use GIS technology and remote sensing technology, National Capital Regional Planning Board NCRBP has made GeoPortal Pariman to open to public. Pariman portal for analytical region information and mapping of NCR. Pariman, it is only for NCR. ठीक है. Launched on 31st of August 2021 only for government officials. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसे डेवलप किया है. एनआईसी ने डेवलप किया है. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टल इज एनसीआर जियो पोर्टल परिमाण इज टू रिबोस्ट robust system to facilitate better sub-regional and local planning. New Delhi Sahbhagita Scheme. Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena in July 2022 launched Sahbhagita scheme to increase involvement of Residential Welfare Association in optimal tax collection and waste management system. Sahbhagita scheme. It is launched by Delhi Lieutenant Governor V.K. Saxena to involvement of Residential Welfare Association in optimal tax collection and waste management system. Next is Har Ghar Dastak. Indian government relaunched its campaign Har Ghar Dastak in 2.0 version. It is launched on 1st of June 2022 by Ministry of Health and Family Welfare. The first phase was launched on November 2021. Its objective is door-to-door drive for COVID-19 vaccination of all beneficiaries and spreading awareness about COVID-19 vaccination. हर घर दस्तक. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है? कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस को स्प्रेड करना बाय इंडियन गवर्नमेंट. हर घर दस्तक. ठीक है. एंड कौन सी मिनिस्ट्री है? इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. नेक्स्ट इज भारत गौरव ट्रेन्स. Indian Railway Southern Zone flagged off country's first privately run train under the Bharat Gaurav train on June 14, 2022. The train was being operated between Coimbatore in Tamil Nadu to Srinagar Shirdi in Maharashtra. Sainagar Shirdi in Maharashtra. किसके किसके बीच में? Coimbatore to Sainagar Shirdi. Southern Railway has become the first Indian zone in India to provide first registered service under Bharat Gaurav train. कौन सा रेलवे जोन है? Southern Railway Zone. The scheme was announced by Indian Railway on November 2021. The initiative was started by Union Government देखो अपना देश to promote domestic tourism. Bharat Gaurav trains from Coimbatore to Sainagar Shirdi. ये पहला जोन बन गया है इंडिया में सदर्न रेलवे टू रजिस्टर सर्विस प्रोवाइडर्स अंडर भारत गौरव ट्रेन. ठीक है. Next is UNESCO Reserve List. Kufsugal Lake
National Park. Kuvs Gul Lake National Park of Mongolia has been added to World Network of Biosphere Reserves by UNESCO. कहाँ की लेक है ये? It is in Mongolia. Kuvsgul Lake. It is in Mongolia. This decision was taken under 34th session of International Coordinating Council of Men and Biosphere Program. EASE 5.0. On June 8, 2022, Finance Minister Nirmala Sitharaman launched EASE 5.0 Common Reforms Agenda of EASE Next Program. EASE 5.0 Common Reforms Agenda has been developed for public sector banks. EASE agenda was launched by government in collaboration with PSB in January 2018. EASE 1.0 showed significant improvement in performance of PSB in resolving non-performing assets (NPA) in transparent manner. NPAs वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए EASE 1.0 था, अब EASE 5.0 लॉन्च किया गया है 8 जून 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा. ठीक है. EASE 5.0 कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा. Kerala Asia's first global startup ecosystem report. Asia's Global Startup Ecosystem Report was recently released on June 14, 2022 in the light of London Tech Week. In report, startup ecosystem in Kerala has been ranked first in position in Asia. केरला की रैंक नंबर 1 है इस रिपोर्ट में. ठीक है. लाइट ऑफ लंदन टेक वीक 2022 के अंदर इसको रिलीज किया गया. एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट. ठीक है. केरला की रैंक फर्स्ट है. दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी launched in May 2022. Vision was to enable Delhi to emerge as global innovation hub and the most preferred destination for startups by 2030. ठीक है. Business Blaster program currently being run in Delhi government schools. Business Blaster program Delhi government school में ये प्रोग्राम चल रहा है. आपका दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी 2030 तक का एम था कि यहाँ पे दिल्ली में ये मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बन जाए किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए. India's biggest drone festival, Bharat Drone Mahotsav, inaugurated on 27th of May 2022 by Prime Minister of India in Pragati Maidan, New Delhi, focused on India drone taxi prototype, Kisan drone digital mapping through drone technology. आपका कहाँ पे हुआ ये? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में. India's biggest drone festival. Ladakh recorded highest sex ratio in the country. In May 2022, Office of Registrar General and Census Commissioner has published the annual report on vital status of India based on the Civil Registration System 2020. As per report, Union Territory of Ladakh 1104 recorded the highest sex ratio at birth. Highest sex ratio at birth in country in 2020. 1104. Ladakh followed by Arunachal Pradesh, Andaman Nicobar, Tripura and then Kerala. तो अगर पूछेगा यूटीज और स्टेट्स को मिला के फर्स्ट पे कौन है तो इट इज लद्दाख एंड इन ओनली स्टेट्स. यूटीज को छोड़ दिया जाए तो इट इज अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट पे है 1011. इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल. So by Ministry of Science and Tech has inaugurated country's first lavender festival in भादेरवा जम्मू डिवीजन ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर. कहाँ पे ये है? जम्मू एंड कश्मीर के भादेरवा जम्मू डिवीजन में. भादेरवा is a birthplace of India's purple revolution as it is best place for lavender cultivation in terms of India land and climate. In 2018, country's first National Institute for High Altitude Medicine was built in भादेरवा जम्मू एंड कश्मीर. हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन कहाँ पे खोला गया? पहला नेशनल इंस्टीट्यूट इसके लिए भादेरवा जम्मू एंड कश्मीर. 540 megawatt Khor hydro electric project. In April 2022, the Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister approved the investment of 4526.12 crores for 540 megawatt Khor hydroelectric project on river Chenab. आपको पता होना चाहिए ख्वार कहाँ पे बन रहा है? It is on river Chenab in Kishtwar district of Jammu and Kashmir. So Khwar is on river Chenab in Jammu and Kashmir. It is in Jammu and Kashmir on river Chenab. ठीक है. 540 megawatts. Khwar is on Chenab. Mumbai and Hyderabad 2021 Tree Cities of the World.
In April 2022, the United Nations Food and Agricultural Organization (FAO) and Arbor Day Foundation have jointly recognized Mumbai and Hyderabad as 2021 Tree Cities of the World. Hyderabad and Mumbai have become 2021 Tree Cities of the World. World highest tunnel at Shinkula Pass. BRO Director Lieutenant General Rajiv Chaudhary on April 16, 2022 informed that BRO will construct world highest tunnel at Shinkula Pass at 16,580 feet to connect Himachal Pradesh Shinkula to Ladakh Lakhang. ठीक है, क्या क्या कनेक्ट करेगा? इट विल कनेक्ट हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख. इट इज शिंकुला पास विच विल द वर्ल्ड हाईएस्ट पास. NAT grid. On May 3rd, 2022, Amit Shah inaugurates the National Intelligence Grid (NAT Grid) campus in Bangalore. कहाँ पे खुला है ये NAT Grid campus? In Bangalore. Samarth initiative. It is launched by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises MSME मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है ऑन वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑफ 8th of March. Its objective is to provide skill development एंड मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस टू विमेन. चलो ये ध्यान देना है कि स्किल डेवलपमेंट और मार्केट असिस्टेंस विमेन के लिए है. इंटरनेशनल विमेन डे के दिन लॉन्च हुआ है, बट लॉन्च किया है किसने? एमएसएमई ने. ठीक है. सुजलाम 2.0 कैंपेन रिसेंटली on 22nd of March 2022 on World Waters Day. Sujlam 2.0 campaign was launched by Gajendra Singh Shekhawat, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति. एम क्या है? लॉन्च फॉर ग्रे वाटर मैनेजमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. ठीक है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए सुजलाम 2.0. सु मीन्स गुड, जल, हियर इट इज जल, इट इज हिडन वर्ड, तो आपको पकड़ लेना है जल से कि ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के लिए है. ठीक है. बाहिनी स्कीम बाई गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम. बाहिनी स्कीम फॉर गर्ल्स. क्या है ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड 100% एक्सेस टू सेफ एंड फ्री सैनिटरी पैड्स टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोइंग गर्ल्स. सो इट इज बाहिनी स्कीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ free and safe sanitary pads for secondary and senior secondary school going girls. India's first 100% women owned industrial park. India's first fully owned women industrial park opened indoors in Hyderabad in March 2022 presented by FICCI. ठीक है, कहाँ पे है ये? Open its doors in Hyderabad. हैदराबाद में खुलता है ये. UP built highest number of Amrit Sarovars. So UP has become first state in India to construct 8462 Amrit Sarovar lakes in India. Within Uttar Pradesh, Lakhimpur Kheri was the first with construction of 256 Amrit Sarovar. लखीमपुर खीरी टॉप किया है, 256 अमृत सरोवर बने हैं. यूपी में सबसे ज्यादा अमृत सरोवर हो गए हैं. ठीक है. यूपी के बाद मध्य प्रदेश एंड देन जम्मू एंड कश्मीर. मध्य प्रदेश में कितना है? 1668 एंड जम्मू एंड कश्मीर में 1458. बट यूपी सबसे आगे है. इट इज 8 टाइम्स ऑफ मध्य प्रदेश ओनली. 8462. ठीक है. अमृत सरोवर मिशन कब लॉन्च हुआ था? April 24, 2022 to promote water conservation by development and rejuvenation of water bodies in all districts across India. लखीमपुर खीरी टॉप किया है with construction of 256 अमृत सरोवर्स. तो आज के लिए इतना रहने देते हैं. This series is of current affairs from April 2022 to 15th of April 2023, and this series is going to be very important for all those going to appear in UPPCS exam going to be conducted on 14th of May 2023. ये सीरीज ये वीडियो आप उन लोगों को फॉरवर्ड कर दो जो लोग ये बुक नहीं खरीद पाए हैं, जिनके पास ये बुक नहीं अवेलेबल है. एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन टू कीप going with this series. Thank you. Jai Hind and stay tuned.